तो गाइस अभी हम इस साउंड बार के अंदर लो बेस टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसका सबवूफर कैसा परफॉर्म करता है लो बेस के अंदर। 30 से 25 हर्ट्स के बेस को टेस्ट करेंगे। वैसे तो ये साउंड बार अपने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, मगर फिर भी कुछ यूज़र्स की डिमांड रहती है कि भाई अगर 30 से 40 हज़ार रुपये हम खर्च करें, वैसे तो 40 हज़ार के आसपास की आती है, 30 से 40 हज़ार खर्च करें तो इसके अंदर हमारे को थोड़ा बहुत भी लो बेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यूट्यूब के अंदर मैं चला रहा हूँ, नॉर्मली साउंड को कर रखा है मैंने इसके अंदर हाफ से भी कम कर रखा है अभी फ़िलहाल। कितना, ये 34 पे कर रखा है इसका साउंड, और साउंड बार का कर रखा मैंने 90। फुल मैंने आज तक नहीं चलाया इसको। बाकी देखते हैं एक बार इसका कि सबवूफर कैसा वर्क करता है फिर भी। Yes, ma'am. Tonight I want a bad, bad chick. She the booty from my mama. Acting nice and big. It's all the niggas know. Bad, bad chick. Now she says come. All about money. Don't nobody own shit. Bad, bad chick. Bad bitch. Bad bitch. Bad, bad chick. Bad bitch. Bad bitch. Pussy tight. Pussy smart. अभी मैं आपको इसके अंदर एक डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट प्ले करके दिखाने वाला हूँ। Right now, you're listening to where cinematic audio has been. Because we are so used to hearing sound this way, अभी इसकी आवाज मैंने कर रखी है सिर्फ that it is merely a fraction of what its potential could be. But what if sound could be extraordinary? Again. listening to Dolby Atmos. With Dolby Atmos, audio can precisely move in any direction within this theater, whether the sound sweeps from the back to all the way in front, arcs overhead, or moves anywhere in between. Today, you will feel every dimension. How does that sound? Love traveling in winters, and when it gets cold, I reach out for my heat tech cashmere. Every time.
तो भाई ये है इसका कुछ बेस, बाकी कमेंट में बताना कैसा है कैसा नहीं है।